Hello students. Today we are going to start a new chapter number 3rd, and name of the chapter is electrochemistry. Okay, marks weightage student same, that is 4. Okay, one numerical may be of 2 marks or 3 marks. Okay, and 2 conceptual question. Okay, so it will be the pattern, board pattern. Okay, so in electrochemistry, first of all we will understand some basic term, then we will continue the topic. Okay, first topic is electrochemical cell. Electrochemical cell, a cell which converts chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell or galvanic cell. Third name is Daniell cell. Okay, so what are electrochemical cells? Which will convert the chemical energy into electrical energy. Okay, as you are looking in this device, some chemicals are placed, so they are producing the current of 0.46 volt. So how is it working? We will discuss later. First, understand some basic term like oxidation potential. This is potential, TIAL. Okay, potential. So what is oxidation potential, student? Suppose two metal are there. Okay, element are there. Okay, this is E and this is E2. This is E1 and this is E2. Two elements are there. So students, this element can lose its electron. Okay, or this electron may gain the electron. Similarly, this element can lose its electron as well as this element can gain the electron. Mean both element have two types of tendency: to lose its electron, to gain the electron. Okay, two tendencies are there, but out of two tendency, only one tendency is higher. Mean one tendency will dominate over other tendency. But when, for example, as you see in the cricket team, okay, two players are there. First, we are discussing about 3 players. First is Virat Kohli. Okay, second player is Ravindra Jadeja, and third is Ishant Sharma. Okay, 3 players are there. Okay, so each player have two qualities: bowling and batting. Okay, both. Virat Kohli also knows how to bowl, but we know that he is not good in the bowling. Similarly, Ishant Sharma is good in bowling, not in the batting, but he knows how to hold the bat. Okay, so students, suppose I am comparing Ravindra Jadeja with Virat Kohli. So who is good in batting? You will say Virat Kohli is good in batting. Okay, now I am comparing Ravindra Jadeja with Ishant Sharma. Now who is good in batting? You will say Ravindra Jadeja. Okay, when I was comparing Ravindra Jadeja with Virat Kohli, then Virat Kohli is batsman and Ravindra Jadeja is bowler. Okay, but when I comparing Ravindra Jadeja with Ishant Sharma, then you will say Ravindra Jadeja is good batsman and Ishant Sharma is bowler. Okay, here Ravindra Jadeja has two ability. He shows two types of character as a bowler when he compared with Virat Kohli, and as a batsman when he compared with Ishant Sharma. Similarly, students, suppose
three element are there. Okay, metal A, for example, zinc, copper and silver. Okay, if I will compare zinc with copper, then zinc is good electron loser, and copper is electron gainer when I compare zinc and copper. Okay, but when I compare copper with silver, then what will happen? Copper is good electron loser. Now copper is good electron loser and silver is electron gainer, acceptor. Okay, so any metal have two types of ability. It can lose its electron, it can gain the electron. Is it clear? Any metal can lose its electron or gain the electron, but both tendency or type of tendency will depend when, ये जो दोनों टेंडेंसी हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी? हम इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? जैसे मैं कॉपर को कंपेयर करता हूँ जिंक के साथ, तो मैं कहूँगा जिंक इज ए गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. बट व्हेन आई विल कंपेयर द कॉपर विथ सिल्वर, देन आई विल से कॉपर इज ए गुड इलेक्ट्रॉन डोनर. It is clear or not? So student, the ability of an element to lose its electron is known as oxidation potential. Okay, and the ability or tendency of an element to gain the electron is known as reduction potential. Mean each element has its oxidation potential as well as reduction potential. Each element has its oxidation potential, mean ability to lose its electron, or ability or tendency to gain the electron. For example, first zinc, second copper, third silver. First zinc, second copper, third silver. When I will compare zinc and copper, then zinc has good tendency to lose the electron, mean it has good oxidation potential. But if I will compare, again I am drawing zinc, copper, silver. If I will compare zinc and copper, then you will say zinc has good oxidation potential and copper has good reduction potential. Good, मैं short में लिख रहा हूँ, reduction potential. किसके साथ है good reduction potential? When I compared copper with zinc. But now compare copper with silver. अब copper को किसके साथ compare करेंगे आप? Silver के साथ. Now what will happen when you will compare copper with silver? Then you will say now copper has good oxidation potential. अब कॉपर क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज कर सकता है सिल्वर के कंपेयर. क्यों कर सकता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप समझ लें जस्ट. ओके, सो कॉपर हैज बोथ टाइप ऑफ टेंडेंसी. व्हेन इट कंपेयर्ड विद जिंक, इट हैज गुड रिडक्शन पोटेंशियल, मीन हैज ए टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. बट व्हेन दिस कॉपर कंपेयर्ड विद सिल्वर, now copper has good tendency to lose the electron. Okay, it is clear or not? So I want to tell you each element has two types of nature, mean it can lose its electron or it can gain the electron. Okay, if it will lose the electron, then it is known as oxidation potential, and if it will gain the electron, then it is known as reduction potential. Okay, so next term is now we are going to discuss the what is galvanic cell. First understand the assembly. Here this is the rod of copper is a brown color solid, and this is silver rod. Okay, silver color की होगी. Okay, here copper is dipped in copper sulfate is a blue color, or copper nitrate, whatever. Okay, and zinc is dipped in silver rod is dipped in silver nitrate. What is this? This is silver nitrate. And what is this? Copper nitrate. So what I said? Copper rod is dipped in copper nitrate is dipped in copper rod is dipped in copper nitrate, silver rod is dipped in silver nitrate.
In galvanic cell, students, in galvanic cell, we will take the solution of that metal whose rod we are taking. हम क्या करेंगे गैल्वेनिक सेल में, पूरी मैं असेंबली आपको समझाऊंगा, अभी आप वैसे बस इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लें. हम वही सॉल्यूशन लेंगे, उसी मेटल का सॉल्यूशन लेंगे जिस मेटल की रोड है. ठीक है, यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट क्यों लिया? क्योंकि सिल्वर की रोड है. यहाँ कॉपर नाइट्रेट क्यों लिया? क्योंकि कॉपर की रोड है. अगर मैं जिंक नाइट्रेट लेता तो जिंक की रोड लेनी पड़ती. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट? दिस इज सॉल्ट ब्रिज. नेक्स्ट इज this is salt bridge. So what is this? Generally this tube is connecting these two beakers indirectly. Okay, how is it connecting, and what is the role of this salt bridge, and what is the salt bridge? So student, understand here, I am reducing the size. Student, take a tube and heat this tube at two end. Okay, and when you will apply the force toward downside, then it will be bent as well as from this side, and it will be like U shaped. Okay, like this. Okay, now what will you do, student? There is a algae in the ocean, is known as geladium, and from this algae we extract a chemical, and the name of this chemical is very interesting. Whatever you can read it, either agar or agar. It is two time, agar or agar, not agar, two time, agar or agar. Okay, what is the nature of this agar? Generally this is solidifying agent. What is this? This is solidifying agent, mean its melting point is higher than the room temperature, approximate 96 degrees Celsius or 98 degrees Celsius its melting point. Mean if you will melt at 100 degrees Celsius and you will allow at cooling at room temperature, it will be solidified. क्योंकि भैया 98 से ऊपर ही मेल्ट होगा, ये इससे नीचे तो सॉलिड हो जाएगा ना. So in a U-shaped tube we will fill liquefied agar in this, and we will add some electrolyte like KNO3, KHSO4 etc. और ये आपने ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं whose cation and anion move with same speed. Cation and anion moves with same speed, mean they have same conductance. cation और anion, ऐसे ना हो cation तेज दौड़ रहा हो और anion slow. Okay, you will fill this cation electrolyte in this liquefied agar and will allow to cool at room temperature. और ये ठंडा हो जाएगा, ये इसमें जम जाएगा. This is salt bridge. And what is the function of this salt bridge? This salt bridge can lose its ion towards any beaker. जैसे आप देख रहे हैं इसमें, देखो ये क्या कर रहा है, नाइट्रेट आयन इधर मूव कर रहा है, ये सोडियम आयन इधर मूव कर रहा है. ओके, और ये कर क्यों रहा होगा? इधर जरूरत पड़ रही होगी, इधर आयंस की कमी पड़ गई होगी एनायन की, इसलिए देखो एनायन आ रहे हैं इधर, और यहाँ कैटायन की कमी हो गई होगी इसलिए कैटायन आ रहा है. मीन इट मेक्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा. व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट whose in which conductance of cation and anion is almost same is mixed with agar and allowed to cool at room temperature, and this solidifying mixture is known as salt bridge, which is filled in a U-shaped tube, and it makes the electrical neutrality of two beaker. Okay, so now what is next? So students, now discuss the working. Every part we have discussed. Okay, so we will take that metal rod towards left hand side which has good oxidation potential. ये बात समझ में आई? Who will lose its electron very easily. And on right hand side we will take that metal who will accept the electron easily, mean whose reduction potential is very high. Reduction potential should be high. Here
oxidation potential should be high. It is clear or not? Because this side will lose its electron and this side will gain the electron. अब ऐसा तो ना हो ना ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करे ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, वो जाएंगे कहाँ इलेक्ट्रॉन, भाई एक दे और एक ले, बात खत्म हो गई. सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट हियर, जनरली this metal rod will lose its electron. This metal rod this one, okay, this metal rod is dipped in copper nitrate and concentration of copper nitrate is 1 molar, and this silver rod is dipped in silver nitrate and concentration of solution is 1 molar. Mean both have same concentration, no difference in the concentration. Okay, now what will happen, what I said, this metal will lose its electron, so electron will move here and this is voltmeter, and through this voltmeter electron will come to the silver rod. Okay, so student what will happen, what I said the copper rod will lose its electron, copper rod will lose its electron, so copper rod means solid, okay, it will lose electron, so it will be converted into copper 2 positive and 2 electron. Okay, and copper 2 positive is the part of copper nitrate, copper 2 positive is the part of copper nitrate, mean this rod will be dissolved in the solution. As the copper rod will lose its electron, copper 2 positive will fall down into the solution, will fall down into the solution. ओके क्यों गिर गया वो पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर 2 पॉजिटिव भी तो है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन है. इट्स मीन एज द कॉपर विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, इट्स so it will be converted into copper 2 positive ion and this copper 2 positive ion will go into the solution. Okay, mean this rod will be weaker. After some time क्या देखेंगे आप, ये रोड आपकी कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भैया कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ चला गया, ये सब का सब गिर के किस में चला गया, ठीक है ना, इस साइड आ गया. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट विल हैपन नाउ, these 2 electron has moved towards silver rod through the voltmeter. अब ये यहां पर आ गए, ठीक है. अब क्या होगा स्टूडेंट, लुक हियर अगेन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. If you will not adjust these copper 2 positive ion, or if you will not allow to neutralize these ion, then what will happen, they will pull the electron back. अगर आपने, कहने की सिंपल सी बात ये है हिंदी में, अगर इन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल नहीं किया तो जो आपने अभी इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने लूज करें ये इनको दोबारा खींच लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा. ओके, सो नाउ salt bridge will lose its anion and these anion will react with this copper 2 positive. कहाँ से आया copper 2 positive, रोड से, and it will form the copper nitrate. तो ये तो बहुत काम की बात रही भैया ये सॉल्ट ब्रिज हमारे लिए. तो अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना होता तो इसको आयन कौन देता, कोई भी नहीं देता, ये काम ही नहीं करना था सेल. दैट्स वाई सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आई टोल्ड यू दैट इट विल न्यूट्रलाइज द आयंस. कौन सा आयन को न्यूट्रलाइज किया, जो कॉपर आयन रोड से गिरे थे. ओके, अब ये न्यूट्रल हो गए, अब ये इलेक्ट्रॉन को पीछे पुल नहीं करेगा. अब देखते हैं इन इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ. ये इलेक्ट्रॉन किस रोड पर आ गए, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन आर एट राइट हैंड साइड. नाउ सिल्वर रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सिल्वर रोड इज नेगेटिवली चार्ज. अब व्हाट विल हैपन इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसका, आपका सिल्वर नाइट्रेट का. दिस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मीन हेयर सिल्वर आयंस आर देयर. So these silver ion have positive ions, positive charge, so they will be attracted by these electrons. इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होंगे, आयंस अट्रैक्ट हो जाएंगे. और आप देख भी रहे हैं इसमें बने हुए ये आयंस, देखो ये कहाँ मूव कर गए, रोड पर, क्योंकि रोड पर क्या है, एन आयन. मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, Ag पॉजिटिव आयन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन विच इज लूज्ड बाय दिस रोड एंड बिकमिंग न्यूट्रल. और क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है. न्यूट्रल मीन सॉलिड, और सॉलिड मीन भैया ये रोड पे चिपक गया. मीन थिकनेस ऑफ रोड ऑफ राइट हैंड साइड विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है. थिकनेस विल बी इंक्रीज एंड हियर थिकनेस विल बी
decreased. Here thickness will be increased. It is clear? So what will happen, student? As you are looking here, Ag, that is silver ion, has moved to this rod. नाइट्रेट आयन बचे रह गए बेचारे. अब इनको न्यूट्रल लगाना पड़ेगा. अगर इनको न्यूट्रल नहीं करा तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे ये इनको रिपेल करेगा, क्योंकि नाइट्रेट पे भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है. रिपेल करेगा या वापस चले जाएंगे और इधर कॉपर ले लेगा. इसलिए नाइट्रेट को भेजना जरूरी है. सो दीज नाइट्रेट विल मूव टूवर्ड्स द विच पार्ट, सॉल्ट ब्रिज, एंड विल कम टू दिस साइड. या क्या होगा, ये सोडियम आयन के साथ यही न्यूट्रल हो जाएगा. NaNO3 कुछ भी हो सकता है. बोथ कंडीशंस आर देयर. फर्स्ट, दीज नाइट्रेट आयन विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द कैटायन विच इज फिल्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. डाला था ना हमने एक इलेक्ट्रोलाइट. और दीज नाइट्रेट आयन विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. ओके. So what did you observe? Electron will move from left to right and ions are moving from right to left, means circuit has been completed. If circuit has completed, then there should be flow of current. And as you are observing in the diagram, here is a formation of 0.46 volt of the current. Okay, ये आपका Daniell cell है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ और छोटी छोटी सी बातें पढ़ते हैं. Student, here important thing that on left hand side this rod is acting as the electron source, because this is losing the electron. Okay, this rod is losing the electron, so this is known as anode, and it has negative charge. This is very important. Some students may say that sir anode पे तो positive charge होता है, but in electrochemical cell anode has negative charge. Okay, और वो electrolytic cell होते हैं in which anode has positive charge. Okay, तो ये मत कहना कि सर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है बट वो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड हैज नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रॉन सोर्स. हियर इट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो इट शुड हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नोन एज कैथोड. कैथोड पे कैसा चार्ज है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज है. इट इज क्लियर और नॉट? ओके. थर्ड थिंग, and what did you observe at cathode? You observed the reduction. What did you observe? Reduction. And what did you observe at anode? You observed the oxidation. This is very very important. You observed the oxidation and you observed the reduction. It is clear or not? So again I am saying this is very very important. What did you observe? So left hand side of the electrochemical cell will be anode and right hand side of the electrochemical cell will be cathode, and oxidation will occur at left hand side and reduction will occur right hand side. Okay, next topic. So anode will have negative charge and it will be of left hand side. Cathode will have the positive charge and it will be of right hand side. And student, one more thing you will keep in mind, that rod will act as anode whose oxidation potential is high. जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा भैया उसी को तो आप एनोड बनाओगे. बैटिंग पे उसी को तो उतारेंगे ना जो अच्छी बैटिंग जानता होगा. बॉलिंग वाले को थोड़ी ना उतार देंगे. मीन एनोड rod, that metal will act as anode whose oxidation potential is high, and cathode rod, that metal will act as cathode whose reduction potential is high. It is clear or not? Reduction potential is high. So I am writing in the short what? High oxidation potential. इधर मैं लिखूंगा हाई रिडक्शन पोटेंशियल. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें क्या कहती है, IUPAC कहती है, दैट यू विल राइट लो रिडक्शन पोटेंशियल. भाई जो मेटल इलेक्ट्रॉन अच्छे लूज कर रहा हो तो उसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है ना. मीन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? लो है. सो यू विल कीप इन माइंड दैट. इन अदर वर्ड यू कैन से आई विल कॉल दैट पर्सन एज ए बैटिंग हु इज वेरी बैड इन बॉलिंग. यही तो कहोगे ना. आप ओपनिंग किससे कराओगे? हु इज वेरी पुअर इन द बॉलिंग. ओके, नेचुरल सी बात है. सो हेयर आई एम नॉट यूजिंग गुड बैटिंग, आई एम यूजिंग द टर्म पुअर बॉलिंग, दैट इज लो रिडक्शन पोटेंशियल. और इधर क्या है देखो, हाई रिडक्शन पोटेंशियल मीन दैट मेटल रॉड इज ए गुड एक्सेप्टर. सो मीन वी आर टॉकिंग ए टीम in term of bowling. So Virat Kohli is very poor in the bowling and Ishant Sharma is very good in the bowling. Okay, so what will I say? Once again, left hand side I will take that metal rod on left hand side whose reduction potential is very low, and on right hand side whose reduction potential will be very high. So I am
comparing both metal with respect to reduction potential only. Low reduction potential and this is of high reduction potential. It is clear? So whatever the value of reduction potential, okay, कुछ भी वैल्यू हो इनकी, मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूँ. Okay, now I am taking the difference. So difference of इधर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. कैथोड ये था आपका, एनोड ये था, अभी मैंने आपको बताया. सो डिफरेंस ऑफ हुज, अब पहले मुझे ये बताओ हुज रिडक्शन पोटेंशियल विल बी हाई, कैथोड और एनोड? कैथोड का ही हाई होगा ना. देखो इसका भी मैंने क्या बताया था, हाई रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे हम हमेशा लेफ्ट राइट हैंड साइड पर, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी हाई. सो आंसर विल बी पॉजिटिव. ओके, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. Okay, so the difference of reduction potential of cathode and anode is known as very important term, and this is known as EMF. This is known as what? EMF. I didn't write, so EMF. Next topic is EMF, electromotive force. Electromotive force is the difference of रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. स्टूडेंट बस ये बात आप ध्यान रखना, वो बात अलग है कि आपका जो राइट हैंड साइड पर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, लेकिन मैं यहाँ बात जो कर रहा हूँ बस रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात कर रहा हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज यू विल गेट द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, सो एज यू आर लुकिंग हेयर, व्हाट इज 0.46? दिस 0.46 इज द EMF. Mean this is the difference of reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. This is EMF, cathode minus anode, and it is equal to 0.46. वो भी कैसा है मैं अभी आपको बता देता हूँ. Okay, so reduction potential of silver is 0.80 and reduction potential of copper is 0.34 volt. Okay, so take the difference. So take the difference and what will be the value of EMF of the cell? EMF of the cell cathode minus anode, and what I said cathode that is silver का कितना होता है 0.80 and what is 0.34 is of anode. So answer will be 0.46. It is clear to all or not? ये आपको वैल्यू याद नहीं करनी, हमेशा दी हुई होंगी, आपको पेपर में हमेशा दी हुई होंगी. ठीक है, हमने कैसे याद की, मतलब हमें कैसे पता इसकी सिल्वर की इतनी ही होती है, वो अगला हमारा टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा. ठीक है, now I will write the cell reaction. So cell reaction, first of all I will write the cell reaction on cathode, okay, and I will write the cell reaction on anode. Okay, so what happen on the anode? First of all we will write on the anode. Anode पर क्या हुआ जनरली स्टूडेंट, copper solid loses its electron and converted into aqueous solution. This one, aqueous solution, and it loses 2 electron. Okay, and what happened to the cathode? Reduction. Mean silver positive gain the electron and converted into metallic silver. But student, how many electron is being lost by the copper? 2. तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन को खाने पड़ेंगे इसको. So we will take 2 atom of silver. Okay, so now you will write the complete reaction. When you this is what is happening here, this is reduction half. Cathode is also known as reduction half. Why is it calling at reduction half, student? Because reduction is occurring. And at anode, oxidation half. So these metal rod, these boxes, which one, look here, this part is known as oxidation half, and this part is known as reduction half. Oxidation half, and this is known as oxidation half. Okay, and complete is known as redox cell. Complete is known as redox cell. I am writing in the short, redox cell, because oxidation as well as reduction is occurring. But for calculation of EMF we are taking reduction potential. You will keep in mind. Okay, so now what will be the complete reaction? So student, complete reaction very easy to write. What happen? Copper solid loses its electron and converted into copper 2 positive. Similarly, 2 silver, not 2 silver, just take only 1 silver atom. 1 silver atom gain electron and converted into Ag. Electron will be cancelled. कैसे कैंसिल हो जाएंगे? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इधर लिखोगे ना आप 2 इलेक्ट्रॉन, और वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेगा 2 एटम लेके, तो वो कैंसिल हो जाएंगे इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर से. ओके, बट स्टूडेंट नेक्स्ट reaction is not complete until or unless you will not balance the charge. How many positive charge is there? 2 unit. So on left hand side 2 unit positive charge should be here.
Okay, some disturbance is there, you may get some noise. Okay, so a 2 unit positive charge is here, here only 1 unit positive charge is there. So student, what will you do? You will multiply it by 2. Now 2 unit positive charge is here, 2 unit positive charge is here, so it will be the cell reaction. It will be the cell reaction. So student, during the movement flow of electrons are moving from left to right. Okay, anode is losing its electron to the cathode. So we know that conventional current always move in the reverse direction of electron, mean current will move from right to left, mean cathode to anode. Okay, so now what is happening, just read this point. First, electron will flow from anode to cathode, but conventional current from cathode to anode mean cathode to anode. Second, thickness of copper rod वो क्या हो जाएगी, reduced, and thickness of silver rod will be क्या हो जाएगी, increased, and net EMF will be produced, and EMF will be equal to the difference of cathode minus anode. Okay, so students, I am waiting for your comment. If you like this video, comment. Okay, if you have any doubt, also write in the comment box. I will try to resolve your problem. Thank you. Tomorrow we will discuss next topic. Okay, that is cell representation. Goodbye.